Once again, I would like to welcome Ms. Preeti Srivastava, a great mentor on today's topic, awareness on blood donation. Thank you so much, Janki, Naman. So I guess we're supposed to start. So can we share the screen, please? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So firstly, I would expect this session to be an interactive session. So it shouldn't be that I am the only one who is delivering the lecture from this side and you all are on the receiving end. So you can consider, like, even I am an engineering student like you all. So you can be absolutely comfortable at your place. So let's start with it. So basically, you all are comfortable in bilingual, right? The session is bilingual. You all can unmute yourself and you can type in chat box anything. Like, I want people to be listening. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं सिर्फ स्क्रीन से बात कर रही हूँ. Okay, so please like respond on chat boxes as well. जो भी है, I can see, or you can unmute yourself and you can talk as well if you have any doubt, because I'm here to address all your queries regarding this topic. So basically, the first question I like to ask you all, that who all have donated blood over here? Like approximately 87 people have joined. So I just want to ask, like, who all have donated blood? Yes, no, anything? Yes, ma'am. Okay. No, ma'am. No, Anish is not donated. Okay, not yet. Till now, okay. I can see many no's. कोई भी yes नहीं है क्या? Okay. Oh yes, 4 times. Ritesh has donated 4 times. That's really great. Okay. Okay, not Mohit is also donated. Great. Okay, I can see many no's. Acha, iska any specific reason like why you all have not donated blood yet? Like any specific reason? You didn't get an opportunity to donate. Okay, under 18. Okay, Alok is 18. Okay. Okay, so I'm assuming that you all are in that age group of like under 18 or something. Is that so? Okay. Okay. Got it. So I think this is a really great thing that you all have attending this lecture. Want to but didn't get the opportunity. Okay, Ritik wants to but he didn't get the opportunity. So yes, Ritik, we'll be addressing this thing as well, that you don't need an opportunity. By the end, you will be creating opportunity for yourself, that how you can donate the blood. So let's begin. Like firstly, I want to say this thing, that people address many causes, right? Like firstly, I'd like to congratulate all the 90 people, 89 to 90 people who have joined in, that you've taken the first step towards the cause. Okay, because I firmly believe that to address any cause, it is very necessary to take the first step towards it, and that's awareness, right? जब तक आपको अवेयरनेस ही नहीं है, then how can you understand like कि blood donate करना जरूरी क्यों है after all? Okay, so can we have next slide please? Okay, so why there is a problem? Like, why are we addressing blood donation as a problem? Like, it's a cause of concern in the country which has the population of, can anyone tell me what is the population of India in the chat box quickly? Okay, more people are joining in. Anyone? 140 crore. Okay. Yeah, exactly. You can say that. So 130, 35 crore people out of 130 to 35 crore people, you can see on the that. Okay, yeah, in 2011, very good. So सबको पता है, like, we are people of 1.3 billion, and out of that we only need 15 million blood, right? This is the requirement of our country, that we need annually 15 million blood. But still, out of 1.3 billion, we do not manage to get even this much. Like, we fall short of 2 million blood. Okay, so I'm sure like most of you might have experienced this thing, that okay, घर में like someone, like
in your family, maybe in your family or your relatives or your family friends, somewhere or the other you might have heard that someone needs blood. इन एनी केस लाइक अगर नहीं सुना है, आई होप किसी को ऐसा सुनना ना पड़े, डेफिनेटली. बट इफ मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस लाइक समवन इज हैविंग एन एक्सीडेंट केस और सम किसी को कुछ लाइक हीमोग्लोबिन कम है या कुछ है, लाइक दे नीड ब्लड, एनीमिया हो गया है, सो समथिंग और द अदर इज द कॉज, एंड एक यूनिट 2 यूनिट, सो इन दैट केस द फैमिली पीपल कम अहेड एंड दे डोनेट, राइट. सो वी फील कि ब्लड डोनेशन की जरूरत क्या है, हो तो जाता है. मोस्टली वी थिंक लाइक दैट ओनली, राइट, कि यार कैंप्स तो होते ही रहते हैं, क्या जरूरत है. बट देर आर सो मेनी पीपल आउट देयर, सो मेनी किड्स आई वुड से, who cannot do this. Like there's so many families who cannot give blood to their patient or loved ones every time, because as you can see, I'll be addressing a terminology called as thalassemia. How many of you are aware about thalassemia? क्या होता है thalassemia? Anyone? Yes, no, पता है? Like have you ever heard about this terminology, thalassemia? Okay, no. Okay, I can see many no's. Okay, fine. So basically, thalassemia is a genetic disorder where the child he is born like that with those genes, where his RBCs, like your blood are made of 4 components. Okay, पढ़ा होगा like RBCs, WBCs, then platelet and plasma. Okay, I'm sure लोगों ने plasma सुना होगा. You all have heard, right? During COVID, plasma therapy. Yeah, like see, सबको पता है. So these kids, they fall short of RBCs. That's great. I'm so happy. Like people were aware during the times of COVID as well. So the thing is that thalassemia is a genetic disorder. Coming back to thalassemia, it's a genetic disorder, and these kids need transfusion of blood every month. Okay, so in general in your body, like in an average person's body, the lifespan of thalassemia, RBCs is 120 days. Okay, but in case of thalassemia kids, it's very short. So that's why they need blood transfusion every month. So you can imagine how painful that process is, right? You need blood transfusion every month, and in worst case scenarios, even in 15 days. Okay, so that is the thing. And over here, as you can see that 10,000 plus new thalassemia major cases are being added in India. So basically, you can say that India is becoming a thalassemic capital. Okay, so that is really very scary. And for that purpose, we all need to be aware that why we are addressing this cause. Okay, first place. So जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो, like over here, like voluntary donors per 1,000 population are less than 8. Okay, so when we talk about it, यार मतलब इतने लोगों में like out of 1,000 only 8 people come ahead to donate. So this is like, you know, कितना scary number है, like 0.11% कहीं तो भी है, like out of 0.008%, तो इतना कम है. And like we need like blood is something जो आपको ऐसे अवेलेबल नहीं है, right? So ये जो shortage है, like to help such kind of people like you and me need to come ahead and donate, right? Then only we'll be able to let the ends meet, right? So as you can see, donor only donate once per year. Okay, so we'll be coming to all these terminology in this session. Basically, why I'm saying this, ki donor once in a year, क्यों नहीं, like how many times you can donate in a year, and why you should come ahead, what are your benefits. So we'll be addressing all these things, right? So eventually last point जैसा आप देख रहे हो कि since people don't come ahead to donate, तो infrastructure भी obviously बहुत कम हो जाता है in that case. Okay, so blood banks per million population, like literally you have less than 3 blood banks, like 10 lakh लोगों के बीच में in 1 million population you have less than 3 blood banks. How scary is that? Like just imagine, क्योंकि sometimes like you all are staying in Punjab. I mean I think this is a college of Punjab, right? So यहाँ पे like ऐसे कितने सारे रूरल एरियाज होते हैं where you literally have to travel for 60 to 70 kilometers to get one bag of blood
for your loved ones. So just imagine that situation that someone from your family or your loved ones are in a hospital and you don't have the infrastructure, like आपके आसपास और कोई blood bank ही नहीं है, and you literally have to travel for so long to get one blood bank, and you're not sure even in that blood bank you're not sure कि आपको blood की availability है कि नहीं. Okay, so like in भगवान ना करे कभी like किसी का like negative blood group हो गया या कोई rare blood group निकला, so that is really very scary scenario, right? And ये जो cause है अभी like you can address illiteracy. Obviously all the causes are necessary to be addressed, but आप वो चीजें अपने सामने देखते हो, so you realize okay there is a problem over here. Okay, कि illiteracy है, so there is a problem. India is not 100% literate country. फिर जब hunger strike है, you can see कि हाँ like everyone is not privileged to have food for 2 times. So these things you can see nearby, so you know that there is a problem. But जब तक आप एक hospital में नहीं जाते हो and you don't see a patient struggling, you don't realize कि okay blood shortage करके भी एक बहुत बड़ा concern है. Okay, next slide please. Okay, so why blood donation? Okay, so obviously blood cannot be manufactured. Okay, so blood is something which is naturally available in your body, in everyone's body. So you and me only can take this initiative to come ahead and donate, right? You cannot expect कि अरे यार ठीक है कोई technology आ Ma'am, you're not audible. Okay, take this. Okay, I'm so sorry. Am I audible now? Anyone quickly listen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Thank you Yes, so ma'am. much. Yeah, मेरे Wi-Fi में problem है. I unfortunately I had a power failure over here, so it's fine. Okay, so yeah, let's quickly get ahead with it. So blood can't be manufactured. Yes. So okay, so shortage even leads to professional donor. So anyone of you like know professional donor क्या होता है? Like what is the terminology called as professional donor? Any idea? Yeah, or any guesses? Like since you all are under 18, I'm not sure that you are aware about this fact or not. But any idea like what professional donor बोला है? So any like you can any guesses that what exactly is professional donor? मैम जो मतलब हमेशा देते हो डोनेट करते हो मैम ब्लड. Yes. Who donates? Okay. Okay. Who donates regularly in month or in a fixed time? Okay. Okay. Naveen, I would like to say that he has said the right answer. बाकी सबका answer partially correct है. So basically the person who takes money in return of blood. So firstly that is illegal in India, like anywhere it's illegal, you cannot do that. So चलो एक example ले लेते हैं okay जल्दी से कि आज engineering college के students को पार्टी करनी है, कॉलेज के फ्रेंड्स को पार्टी देनी है हमें, और ऑल ऑफ अ सडन लाइक पता चला घर से पॉकेट मनी नहीं मिला है, तो क्या करेंगे? चलो कह रहे चलो यार ब्लड डोनेट करके आते हैं, पैसे मिलेंगे और फिर उसके बाद पार्टी करेंगे. ऐसा करना नहीं है ओके. फर्स्टली दैट इज इलीगल, वो नहीं कर सकते हो आप, एंड सेकेंडली इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. ओके, लाइक यू कैन डोनेट ब्लड एवरी
3 months. Like if today I have donated blood, I can donate blood after 3 months. Okay, 3 to 4 months. So ऐसा नहीं होना चाहिए कि you've already donated blood and for money you're donating it again, and उसकी वजह से that will affect your health as well as the donor's health. Okay, because the blood which you have given, to regain those things, it takes to recover from it takes 3 months. Okay, so that is one point. So even awareness lacks among people, definitely. मैंने जैसे पहले ही कहा था that out of 1.3 billion population, like awareness की बात आती है, so like literally हमें we cannot get 15 million bags also, like इतना कम भी हम नहीं कर पाते हैं. So definitely that is because of the lack of awareness. We have to do something about it. Definitely we have to do, and I'm glad you all have joined for that today. Next slide, please. Okay, so shortage would be met if 6% of all college going students donate once a year. Okay, so जैसे आपका कॉलेज है, like is your college online or offline? Like अभी any offline ऑनलाइन मैम. online okay, offline Online. हो गया है. Okay, that's great. Online, okay, online, great. Okay, no issues. So just imagine कि only 6% of all college going students they donate blood, so we can overcome this shortage. But 2000, even if I talk about pre-COVID era, so तब भी ये नहीं हो पाता था. Okay, like we used to fall short of 2 million bags. So after COVID का तो पूछो ही मत, like what all the situation is. We'll be addressing that but later on. But this is one thing that ठीक है यार, इतना भी नहीं कर पाते हैं. So imagine the situation, like 2 साल से तो बंद है colleges, all the corporate offices are shut down, and just imagine यार कैसे लोग डोनेट करेंगे. लाइक मोस्ट ऑफ यू आई हर्ड ओवर हियर इन द कमेंट सेक्शन दे सेड कि यार हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली ब्लड डोनेट करने के लिए. लाइक ओके, सो यू गेट माय पॉइंट कि लाइक जब अगर हम कैंप्स नहीं ऑर्गेनाइज करेंगे प्रीमाइसेस, कॉलेज प्रीमाइसेस में या ऑफिस के प्रीमाइसेस में, देन हाउ आर वी गोना डू दैट? सो उसके लिए फॉर दैट सेल्फ अवेयरनेस इज नेसेसरी. ओके, so because even I remember when I was in my first year, I was in college. So जब मैंने first time donate किया था, मैंने सिर्फ अपने friends को देख के donate किया था. I wasn't aware about the fact कि क्यों करना चाहिए, why we are doing this and all. But just because friends कर रहे हैं तो कर लिया था. So unknowingly maybe किसी 3 लोगों की जान बच गई होगी, maybe मेरे blood से. But unfortunately 2 साल में ये भी नहीं हो पाया. Okay. So you need to know that, क्योंकि मुझे उस वक्त अपॉर्चुनिटी मिली थी बट आई वाजंट अवेयर. अगर मैं अवेयर होती तो मैं खुद से जाके डोनेट करती, राइट? आई डोंट नीड अ कैंप फॉर दैट. From age 18 to 65. So I am assuming कि यहाँ पे like जो भी under 18 है, they'll definitely go ahead and donate after 18. And it is safe to donate every 3 months. जैसे मैंने पहले भी कहा, like you can donate blood after 3 months. Okay, and every donation can save 3 lives. So this is important, like every donation saves 3 lives, because जैसे मैंने कहा ना कि आपके blood में there are like components, various components like platelet, plasma, RBCs. So if all these components are considered, so they can be separated and they can be given to patients as per their requirements. Okay. Awareness at this age makes larger impact on society, definitely. So even I believe in that. So keep calm and donate blood, definitely. Next slide, please. Yes, Ank? Next slide, please. So who can be a blood donor? Like as you can see, okay, so who can be blood donor? So definitely जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल जो होता है, that should be 12.5 grams of deciliters. You shouldn't be having any sickness. Like even if you feel a bit sick, like you're feverish or you have flu-like symptoms, then also it's not advised for you to donate blood.
and there are many people who encarve tattoos on their body, so they like कि अरे हमने तो tattoo बना लिया, अब कैसे donate करें? So no, you can definitely not donate for at least 12 months, but after that you can definitely go and donate. And minimum weight should be 45 kgs. Okay, I'll let you know that heart killer. I don't know your exact name, but I'll definitely let you know. Okay, so minimum 3. Okay, so yeah, you can 3 months gap. Minimum 3 months gap is necessary for your next donation, and 4 hours after alcohol consumption. So I'm not gonna ask this क्योंकि obviously सब openly नहीं बोलते who all consume alcohol or not over here, but जो भी करते समझ लो यार कि तुम लोग अगर alcohol consume करते हो, so you shouldn't be consuming alcohol for at least 24 hours before donation, okay? And obviously above age of 18. So yaar, come on yaar, 18th birthday जिसका आएगा, you can start with a bang. So and obviously all the females over here, जो भी लड़कियां हैं, definitely you should avoid donating blood during your menstruation cycles, okay? So that's one of the thing. Next slide please. Okay, common myths about blood donation. मेरा साइज देख, एक्स्ट्रा खून कहाँ से निकलेगा? ओके, कौन कौन है यार? कोई है इधर जिसको ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है अपने आउटर अपीयरेंस को लेकर के, यार मैं नहीं कर सकती या नहीं कर सकता? एनीवन? यार हाँ ना कुछ बोल दो. नहीं? ओके ओके, आर्यन राज has raised his hand. ओके, यस ओके. सो यार जिसको लगता है ना कि वेट कम है, जाके बस सिर्फ अपना वेइंग मशीन पे अपना वेट चेक करो, अगर 45 या 50 के ऊपर है ना, तो डेफिनेटली यू कैन गो अहेड एंड डोनेट योर ब्लड, ओके? तो उसके लिए आउटर अपीयरेंस से कुछ लेना देना नहीं है. यू आर फैट, यू आर थिन और एनीथिंग, इफ लाइक योर ओनली थिंग इज बेसिक वेट क्राइटेरिया फॉलो होना चाहिए एंड यू आर वेरी मच एलिजिबल टू डोनेट, ओके? इवन इफ योर फिगर इज लीन और एनीथिंग, दैट डजंट मैटर. खून देने से डर नहीं लगता साहब, सुई से लगता है. ओके, कितने लोगों को सुई से डर लगता है यहाँ पे? आई एम श्योर होंगे, डेफिनेटली होंगे यार. कम ऑन, एड्रेस इट टुडे. ओके, होता है देने के बाद. ओके ओके, हार्ट किलर, वील एड्रेस दैट थिंग. ओके, नो अच्छा नहीं, अच्छा काफी लोगों को डर भी लगता है. यस, लव डोन यार, अपने असली नाम पे आता है यार, मेरे को कितना डेफिनेटली. हाँ ओके, यस, काफी लोगों को डर लगता है. नहीं लगता है, कांग्रेचुलेशंस, नहीं लगता आपको डर. बट जिनको डर लगता है, कम ऑन यार, उनको मैं पूछना चाहती हूँ यार, कोविड के वैक्सीन लिए हैं? सबने यहाँ पे कोविड के वैक्सीन लिए हैं कि नहीं लिए हैं? जिनको डर लगता है सुई से, हाँ ले लिया यार. देखो लिया है, ऑब्वियसली मुझे लग रहा लिया ही होगा, तभी तो कॉलेज प्रेमाइसेस में लाइक मिलेगा परमिशन. यस, देखो जिनको डर लगता है उन्होंने भी लिया है. तो यार जब अपने पे आती है तब भी डर लग रहा था क्या? ये बता दो. क्या ना ओ यस, डेफिनेटली संकेत, डेफिनेटली यू कैन डोनेट. जबरदस्ती लेना पड़ा. अच्छा, मुस्कान को जबरदस्ती, बट मुस्कान ऑप्शन नहीं होता. ओके, तो चलो यार टाइम वेस्ट ना करते हुए डेफिनेटली आगे बढ़ते हैं. तो मैं बस जिनको डर लगता है उनको बस एक ही बात बोलना चाहूंगी, यू हैव एन ऑप्शन टू बी स्केर्ड ऑफ अ निडल और नॉट. ठीक है, जब आपको खुद को जरूरत है, लाइक यू नीड टू टेक वैक्सीन, इट्स अनअवॉइडेबल, सो डेफिनेटली यू नीड टू ओवरकम दैट फियर एंड आपको जाना ही पड़ा टू टेक द वैक्सीन, राइट? But there are so many kids who don't have this liberty. They are not that liberty कि like यार मेरे को सुई से डर लगता है तो आज मैं खून नहीं लूंगा. It's about life and death for them. So imagine the thing, right? I mean, एक ऐसा situation imagine करो कि like thalassemia kid is there, like किसी को बहुत ज्यादा खून की जरूरत है, उनको हर महीने ये हॉस्पिटल्स के चक्कर काटने पड़ते हैं टू गेट दी ब्लड ट्रांसफ्यूजन. ऑब्वियसली मैं बहुत डीप में थैलेसीमिया के बारे में नहीं बता रही हूँ बिकॉज दिस सेशन इज ओनली रिलेटेड टू ब्लड डोनेशन, बट वी कैन टॉक अबाउट इट सम टाइम एल्स, लाइक अगर कोई और सेशन ऑर्गेनाइज होता है तो.
because that will take probably another session. So ऐसा situation imagine करो यार कि family है, उनको like हर महीने hospitals के चक्कर काटने पड़ते हैं, and after that like सोचो कि एक तो बच्चे को blood देना पड़ रहा है, they need to take needle लेके उनको पूरा transfusion लेना पड़ रहा है, and on top of that blood की availability नहीं है. So imagine how painful that situation is for family. And ऐसा situation किसी पे नहीं आना चाहिए, but this is what the reality is. Most of the people go through this situation because even when we handle emergency cases, this is the fact कि like यार ऐसा होता है. So just imagine if you overcome this one fear of needle, you can save 3 lives and you can actually take blessings. यार कितना फर्क पड़ता है यार, come on. वैक्सीन ले सकते हो तो 3 महीने में एक बार करना है, या फिर 6 महीने में एक बार कर लो, 4 महीने में एक बार कर लो, बट एक ही बार करना है. एक बार पिंच लेकर के 15 मिनट का काम है, हो जाता है. ओके, इतना टाइम नहीं लगता है. नो वे वीकनेस हो जाएगी. अच्छा हाँ, किसी ने तो बीच में बोला था कि वीकनेस हो जाती है. किसको हुई है वीकनेस? आपने डोनेट किया है? आई वांट टू नो. एनीवन? किसी ने तो बोला था चैट बॉक्स में. Okay, Shivam Kumar. Okay, हाँ. So whoever is it, I'm not taking the name. Firstly, मैं ये बोलूँगी कि weakness नहीं होती है because I've personally donated. Okay. I am not sure. Maybe उसने maybe properly follow नहीं किया होगा whatever the blood guidelines the blood bank has given him. So if that is the scenario, then in that case तो definitely हो सकता है, but it never happens. Like I had one video I'll share with you all if possible of Vijendra Singh where these sportsmen they donate blood and उनके coach like they come ahead and they like यार blood आ जाओ एकदम से अभी वापस से stadium में because weakness नहीं होता है. Okay, so I'll come over it later. Weakness तो firstly नहीं होता है. I'm clearing this myth right now. अगर कुछ हुआ है so that is some other reason. आपने properly guidelines follow नहीं किए होंगे या कुछ ऐसा some other reason, but blood donation की वजह से नहीं होता. Okay, आज बिल्कुल टाइम नहीं है, नेक्स्ट टाइम पक्का. ओके यार, ब्लड डोनेशन में मैंने जैसे कि कहा कि अच्छा हाँ, इधर किसी ने किया था ना, मैं क्यों बोलूं, लेकिन आप ही लोग बोलो. समवन सेड कि 4 टाइम्स किसी ने तो डोनेट किया है ऑलरेडी. यार बोलो यार, बोल सकते हो अनम्यूट करके. हाँ रितेश आपने किया है राइट? यू हैव डोनेटेड. ओके, रितेश कैन यू एक्सप्रेस कितना टाइम लगता है फ्रॉम योर एक्सपीरियंस? जस्ट unmute yourself and tell once. रितेश, am I audible to you? यार हाँ ना, वॉइस नहीं आ रहा था, कट लैग हो रहा था वॉइस. ओके यस मैम, अच्छा ओके, सबको लैग हो रहा है क्या मेरी वॉइस? यस मैम. ओके, आई एम सो सॉरी अबाउट इट. यार बोल दिया करो ऐसा कुछ हो तो. सो बेसिकली हाँ, सो रितेश जस्ट शेयर योर एक्सपीरियंस. कितना टाइम लगता है ब्लड डोनेट करने के लिए? ज्यादा तो मैम 2 से 3 मिनट लग जाते हैं. 2 से 3 मिनट मतलब कितना लगे थे, टाइम लगे. मतलब वहाँ पे मीन्स कि रेस्ट करने के लिए 30 मिनट्स बोलते हैं, बाकी बाद 5 मिनट तो लग ही जाते हैं. 8 मिनट. ओके ओके, ठीक है रितेश, वेरी गुड. बट ओके, सो मेरा एक्सपीरियंस कुछ और कह रहा है. ओके, मैक्सिमम ठीक है, रितेश तो 8 मिनट कह रहे हैं, मैक्सिमम 15 मिनट लगेंगे आपको ब्लड डोनेट करने के लिए. ओके, उससे ज्यादा नहीं लगते हैं. एंड प्रैक्टिकली 15 मिनट लगेंगे. यस, सो उससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है किसी को. एंड अगर मैं समझ लूं कि अगर आपको मान लो, लेकिन वर्स्ट के सिनेरियो इफ यू नीड टू ट्रैवल, देन प्रोबेबली 10 मिनट्स एक्स्ट्रा इधर उधर आपको और करना पड़ेगा. बट उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. उससे ज्यादा तो हम बैठ के यार एक सीजन पूरा बिंज वॉच कर लेते हैं OTT प्लेटफॉर्म्स पे. ओके, लाइक कम ऑन, अगर कोई मेरे को ये बहाना देता है ना कॉलेज स्टूडेंट में, तो भाई रहने दो, क्योंकि मुझे पता है कि सब इधर देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, पता नहीं दुनिया भर की चीजें देख लेते हैं. नेटफ्लिक्स है, Amazon प्राइम वीडियोस है, हॉटस्टार, सब कुछ है. सो ये रीजन तो वैलिड नहीं है. 3 महीने में आप 40 मिनट निकाल सकते हो आराम से. सो ब्रो, दे सेल द ब्लड एंड मेक मनी. सो जैसे मैंने कहा कि दैट्स इलीगल,
you need to be aware about it कि अगर कोई आप if you come across a person who is selling blood, definitely you need to stop that. You need to address that then and there, and don't let that happen to you. Don't let anyone take advantage of your situation. So that is one thing, and आपको भी नहीं करना because that's illegal. Okay, so और भी लोग हैं, एक से कितना ही फर्क पड़ेगा. ओके यार, कहने को डेफिनेटली और भी लोग हैं. अगर सब ऐसा सोचने लगते हैं ना, तो जो 13 मिलियन जो आए हैं ना ब्लड बैग्स, वो भी नहीं होते. ठीक है, लाइक इफ एवरीवन स्टार्ट्स थिंकिंग लाइक दैट कि यार एक करने से क्या होता है, मतलब मैं कुछ नहीं होता यार, कर देगा मेरा फ्रेंड कर देगा, पर भाई अभी भी शॉर्टेज है. देयर इज शॉर्टेज. ओके, सो बूंद बूंद से सागर भरता है. सिमिलरली आपकी एक एक बैग से शॉर्टेज कम होगा, राइट? एंड चलो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. यासांग, देख रहे हो, we have the statistics about blood bank on the screen. So we basically compare the situation of 3 year statistics. Ma'am, your Your voice voice is is breaking, ma'am. Ma'am, your voice is not clear. Okay. Ma'am, your voice Is is it not fine clear. now? We couldn't hear you. I'm so sorry Yes, यार, ma'am. No, all it's of a fine. sudden power failure हो गया यहाँ पे. Is it fine now? Yes, ma'am, it's fine now. You can continue. अब ठीक है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. तो या थैंक यू सो मच. तो जैसे कि 3 months 3 years का स्टैटिस्टिक्स देख रहे हो, तो दिस आर्मी ब्लड बैंक, the total donors they had were 5,115 in 2019, when the scenario was absolutely normal, like before COVID era. So majority of blood donors wait once and then wait till another camp emergency call comes. Okay, so thus the time between two blood donations is always irregular. So जैसे कि मैंने कहा ना कि when I wasn't aware of it, right? So I think Ma'am, Ma'am, it is lagging कर रहा starting है. again. Ma'am, it's lagging again. Oh, okay. Is it fine now? Yeah. Yes, ma'am. Yes, ma'am, we are now. Okay. Yeah, please. Sorry. I'm so sorry. I have some issue over here for connectivity. Unfortunately, technology ditches us every time. Okay. So end वक्त पे जाना होता है. So that's the for patients to get blood on time and to make the system self-sufficient and sustainable, we need donors who are regular donor. So men can minimum they can donate in 3 months, and women can donate in 4 months. Okay. So basically women cannot, like it is advised कि आप 4 months में जाके donate करो, because you go through menstruation cycles as well, right? So obviously उसकी वजह से hemoglobin usually हम देखते हैं women में कम ज्यादा हो जाता है, but that is a different thing. But yeah, you can go. But if you are fit and fine, if you're absolutely fine, आप अपनी डॉक्टर से पूछ के आप 3 months में भी कर सकते हो, definitely. Okay, so that is one thing. So आप लोग तो statistics देख ही रहे हो कि कितना कम हो गया है, like the donors count has considerably dropped after 2019. So next slide please. Yeah, quiz time. या चलो क्वेश्चन पूछ लेते हैं यार, अब तो आंसर करना सब. नेक्स्ट स्लाइड. चलो पहला क्वेश्चन आ जाए. What is the maximum number of lives a single unit of blood can save, and how? How भी बता दो यार. हाँ चलो, हाँ वो मैंने पहले ही बोला था. 1 2 3. ओके. हाँ 3 सबके आंसर आ गए. वेरी गुड. चलो आंसर देख ले फिर. चलो देख लेते हैं आंसर क्या है. एंड हाउ कोई बता सकता है? एक सेकेंड. हाउ कोई बता सकता है क्या कि हाउ कैन वी सेव 3 lives? Yeah, you can talk over here, like you can unmute yourself and you can just tell me like how can you save 3 lives? I think I've mentioned that also in the previous slides. 3 is okay. Vanchika, and what are those components? Can anyone tell me?
प्लेटलेट्स, Any? प्लाज्मा। Okay, Ritesh, very good. RBCs of blood, okay. Good, great. यार सब सुन रहे हैं मतलब मैं मतलब स्क्रीन से बात नहीं कर रही हूँ. I'm so happy. चलो नेक्स्ट आंसर देख लेते हैं. चलो नहीं है. Okay, so it can be separated into components: red blood cells, platelet, white blood cells, plasma, and all these components can save lives. Definitely. Okay. Next question, please. Which is the rarest blood group? चलो देखते हैं आप किसको बताइए. Negative. ओ नेगेटिव। O negative. Okay. यार मुझे बड़ी खुशी हो रही है. मैं बहुत ही अवेयर युवक युवतियों से बात कर रही हूँ यहाँ पे. ओके चलो बट सब लोग यार एक ने आंसर दे दिया है तो सबको टेपना है वही है ना. चलो कोई ना. आंसर देख. ओके और आंसर्स आ रहे हैं ए बी ने. और चलो ओ नेगेटिव वो से ओ पॉजिटिव से अलग कुछ आया. हाँ योगेंद्र. ओके चलो कैन वी सी द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके अंकित को भी पता है. आई एम सो हैप्पी. ओके चलो अंकित एंड 2-3 लोगों ने बीच में आंसर दिया था. आई एम सॉरी आई मिस योर नेम बिकॉज इन द कांस्टेंट मैसेजेस. हाँ so yeah, Bombay blood group is the rarest blood group and yeah. Is it fine now? Yes, that is fine. Okay. So Bombay blood group is rarest blood group. अभी किसी ने आंसर किया था and I'm really happy. Ankit has answered. Very good. And when we come to OAB family, then AB negative is the rarest. Okay. Sanket, yeah, you are B negative. That even you are a rare person. Come on, you can save someone's life. Like you are 1 in 67 people. We can find you. Like you're not rare as O positive. और जो लोग O negative कह रहे थे, like you can find 1 in 15% as O negative. So the rarest blood group in OAB family is AB negative. Okay, because that we find in 167 people. Like 1% in 167 people is AB negative. So congratulations to those who have answered correctly. बाकी सब को भी पता चल गया. चलो अच्छी बात है. Next slide please. ओके तो जैसे कि मैंने कहा था कि ब्लड डोनेशन 3 मंथ्स पे कर सकते हैं. लाइक ऑल द मेल्स कैन डोनेट इन 3 मंथ्स एंड ऑल द फीमेल डोनर्स कैन डोनेट इन 4 मंथ्स. बट व्हेन इट कम्स टू प्लेटलेट डोनेशन देन 48 आवर्स में आप लोग का you regain back your platelet. So it is but still it is advised to donate twice in a month. Like आप 15 days में एक बार donate कर सकते हो. Okay, so like that you can donate blood, donate platelet in 24 times in a year. And coming to blood donation, you can donate definitely 3 to 4 times in a year. Okay, so COVID में बहुत लोगों का doubt ऐसा होता है कि like what if we contract COVID? Okay, so when can we donate blood? So obviously as you can see on the screen कि जब भी आप COVID positive test होते हो, okay, when your RT-PCR report comes as COVID positive, from that day to the 28th day you cannot donate blood. Okay, after that you can definitely go ahead and donate. But if you still have symptoms like flu like symptoms COVID में जैसे होता है, it is not advised to donate in those times. Okay, so that is one thing. And 14 अगर किसी को like someone who was hospitalized और उसको फिर से टेस्ट कराना पड़ा, like they went again for the test, so after you tested negative, RT-PCR is tested negative, then you can go after 14th day. Okay, and yes, vaccination जिन्होंने नहीं लिया है, for you कि blood donation can be done after 14 days of taking vaccine. Okay, सेम विद प्लाज्मा. और प्लाज्मा डोनेशन ठीक है ब्लड कोविड के लिए बंद हो गया है, बट स्टिल इट इज देयर. लाइक पीपल यूज प्लाज्मा थेरेपी फॉर अदर डिजीजेस एज वेल. ओके, कैंसर वगैरह में अभी भी यूज होता है वो. सो ऐसा नहीं कि प्लाज्मा थेरेपी कंप्लीटली इरेडिकेट कर दिया है. ओके, सो दैट वन थिंग. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज.
ओके, चलो यार, समाज सेवा की तो बहुत बातें कर ली कि यार चलो इनकी जान बचा सकते हैं, उनकी जान बचा सकते हैं, सुपर हीरो बन सकते हैं, बट हमारा क्या फायदा है? दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, राइट? कि लाइक व्हेन यू डोनेट ब्लड, व्हाट इज affecting you and how it is beneficial for you. So that is also important. So coming to it, you get a better blood flow. Okay, so that is one thing. नहीं, ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ेगा? हाँ, राइट राइट, ओके, आप बता रहे हो, ओके ओके, राइट अंकित, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा. सो ब्लड फ्लो इज इवेंचुअली दैट बिकम्स गुड, योर इम्यूनिटी इंक्रीजेस. सो ऑब्वियसली जैसे हमने पहले बात की थी कि 12.5 HB लेवल होना चाहिए. So when you start working for it, when you become a regular donor, so obviously that means you're maintaining your HB level above 12.5. So that is common sense. कि आपकी इम्यूनिटी डेफिनेटली बूस्ट होती है. ओके, सो दैट्स वन ऑफ द थिंग. You get a mini checkup. Okay, so obviously when you donate blood, it directly doesn't go to the patient. Okay, like ऐसा नहीं कि आपके बॉडी से ब्लड निकाल लिया और डायरेक्टली किसी पेशेंट को ट्रांसफ्यूज किया है. It goes under various tests, like dengue is checked, hepatitis is checked, all the transmitted diseases are checked, diabetes is checked. So all these checkups are done, and after that it gets, so basically you get those reports as well. If you ask the blood bank, so they'll be giving you those reports as well, so you know कि किधर plus minus और किधर क्या fault है, and you can work accordingly. Okay, so that is one thing. Your iron levels stay balanced. Okay, किसी को ब्लड की बीमारी हो तो मैम वो ब्लड डोनेट नहीं करे, ब्लड डोनेट नहीं कर सकता ना. ब्लड की बीमारी ऐसे कैसी बीमारी, कौन सी बीमारी की बात कर रहे हो अंकित आप? ओके, सो ऑब्वियसली नहीं कर सकता, उसे खुद जरूरत तो पड़ेगी. हाँ ठीक है. ऋतिक, वांट टू से समथिंग? Yes, ma'am. Actually, I want to ask Yes. if someone has a minor heart attack हाँ. and he went through a surgery, means Angioplasty, you mean to say? actually, ma'am, my father had a minor heart attack last year. Mm-hmm. He used to donate blood earlier, Okay. बट अभी मतलब जैसे इसमें स्लाइड में लिखा हुआ है कि ये हार्ट अटैक का ये लो करता है, राइट? तो कैन ही डोनेट ब्लड नाउ? नहीं, if he's taking blood thinning medicines, तो obviously वो donate नहीं कर सकते. And if he has undergone angioplasty, so these are the terminologies which you need to discuss with your doctors. But obviously, even like my father had gone through that phase, so obviously what happens is उसमें strand लग जाता है, so you start taking blood thinning medicines. Okay, so you cannot donate in that case. Okay, so he cannot, definitely not donate. And coming to this point, may lower the risk of heart attack. I'll tell you why. Okay, basically, specifically it happens in male. Like you might have heard right now कि बहुत सारे like young middle age के जो हैं actors, या बहुत हमने news में भी देखा, like सिद्धार्थ शुक्ला, you might have heard that we lost him due to heart attack. Like all of a sudden, he was fit and fine, everything. But what happens over here is that there is bad cholesterol in men, specifically in men, which cannot get eliminated all automatically. Okay, so that is the cause of heart attack over here. But what happens in like आपने definitely सुना होगा ना, जोक भी मारते हैं क्या कि women में कम है heart attack का rate compared to men. Okay, दैट इज बिकॉज लोग कहते हैं कि यार विमेन्स को हार्ट अटैक नहीं आता है क्योंकि उनमें हार्ट नहीं होता है. ऐसा नहीं है, उनमें हार्ट होता है, बट द थिंग इज कि उनमें कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाता है. व्हाई? बिकॉज दे अंडरगो मेंस्ट्रुएशन एवरी मंथ. ठीक है, सो उसमें जो ब्लड फ्लो होता है, इन दैट द बैड कोलेस्ट्रॉल गेट्स फ्लश्ड ऑफ. ओके, विद दैट ओनली. बट मेन में ये चीजें नहीं हो पाती है. yes, पुनीत राजकुमार एज वेल, वेरी गुड रंजन, आप अवेयर हो इस चीज के. बट व्हाट हैपन इन मेन कि when they donate blood, so bad cholesterol is there that gets flushed off from the body. Okay, वो blood के साथ ही निकल जाता है. So that thing is there कि there is always a good cholesterol and bad cholesterol. So वो चीज जब balance हो जाती है, then we can say that reduces the risk of heart attack. Okay,
So may reduce the risk of developing cancer as well. That is one thing, and yeah, helps you mental state. So obviously किसी की मदद करके सबको ही अच्छा लगता है. Mental state किसका खराब होगा? लेकिन ऐसा तो होगा नहीं यार, मैंने इसकी मदद कर दी, मेरा दिमाग खराब हो गया. So obviously mental state पे भी effect पड़ता है. Next slide please. Okay. So obviously all the girls over here, जो जितनी भी लड़कियां हैं, come on, लड़कों के लिए भी, I'm not saying, I'm not being gender specific. So diet improve करने के लिए, like you can refer these diets. So you need to eat iron rich food definitely. For increase vitamin C as well. So whatever increases a vitamin C or iron level, that is necessary to be taken. Okay, so you make sure that you include all these things in your diet. Then you can probably maintain your blood HB level above 12.5. Okay, so increase in folic acid intake, obviously that is one thing. Avoid iron blockers. Okay, यहाँ पे किसको like चाय और कॉफी बहुत पसंद है, like they can have more than 2 cups of tea or coffee in a day. यार no, यार engineering college में हो ना तुम लोग? Okay, Ritesh. Okay. Naman has also raised his hand. Okay. यार नहीं बोल रहे तो बहुत अच्छी बात है. 2 times, okay. विकास को तो प्यार है चाय से. Hey, 2-3 times. Okay, usually it's like यार बोलते हैं कि engineering ऐसे निकाली नहीं जा सकती, but नहीं यार, that's not true. You can survive without it. It is advisable to take low because जो caffeine होता है in your coffee and tea, that is not good for your health so much because that's an iron blocker. Okay, so that acts as an iron blocker. So यार जितना कंट्रोल में करो that's better, right? I'm not saying to stop all of a sudden क्योंकि मुझे पता है आधे से ज्यादा कॉलेज स्टूडेंट किसी स्टारबक्स में सीसीडी में या कॉलेज के आगे की टपरी में ही बैठे रहते हैं. So obviously you don't need to stop that, but yeah, you can do it in control, right? Next slide please. Okay, so now coming to BloodConnect Foundation, what exactly is? कि बात चाय पी सकते यार अनिकेत, मैं पहले ब्लड डोनेशन कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं डाइटिशियन भी बन जाऊंगी. ओके, सेशन के बाद. चलो, to help change this, a group of students got together to do something about it. So definitely being a proud volunteer from BloodConnect, it was started in 2010 by a few students of IIT Delhi, and our vision basically is to make India blood sufficient. जैसे मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि blood shortage है, but it is not addressed everywhere. Okay, so you need to understand कि यार blood sufficient होना चाहिए क्योंकि तुम हो सकते हो, मैं हो सकती हूँ, कोई भी हो सकता है उस situation में, right? So that is one thing. How we do it? Okay, so by spreading awareness, thank God. चलो, by spreading awareness, setting up camps and helping. मेरा 2 minute disconnect हो सकता है. Okay, नहीं, let's do it. Spread awareness, setting up camps and helping patients during emergencies. And multiple initiatives have been launched, like raising awareness of genetic disorders like thalassemia. So जैसे मैंने कहा कि like we can talk about thalassemia as well, but we need to have another session for it. This 1 hour is not enough for it. And Project Red, reaching every donor and spreading awareness about platelet donation as well. So platelet donation is a component of that, but the procedure is different. Okay, so the SDP donors are different in that case. So something when we talk about that is again going to take another session. So creating bigger community of blood warriors, definitely. If you people want to join, you also can join us as a volunteer in BloodConnect, and providing a common platform for organizing organizations across India, map India. Okay, so next slide please. Today this initiative. Okay, yeah. So this is back in 2013, like BloodConnect started its first national collaboration with ISBTI by organizing a blood donation awareness week in Kurukshetra. So like this is such an amazing event. Like
हमने 7 दिन में 10 ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किए इन देयर premises, and approximately 3,000 students came ahead and they made this drop to create an awareness. यार मतलब यहाँ सेशन में हम 100 लोग कितने मुश्किल से जुटा पा रहे हैं, and over there 3,000, like literally 3,000 people came ahead and they made this drop to make awareness and make a mark something regarding this whole campaign. Okay. Your voice is lagging again. Okay. I am so sorry again. Am I audible now? I'm so sorry again. थोड़ा सा. Yes. Okay. Yes. Next slide, please. Quickly, just wind up. Okay. So आप लोगों के लिए क्या है? Like right now we are running a campaign, बाटले बंदिया. So bleed for India, and प्यार में जुनून है पर रक्तदान में सुकून है. So obviously and over here you can see a lovely mascot which we call as Drip Buddy. So you have an amazing campaign going on right now from 26th Jan to 23rd of March. So I'll just brief that immediately. Next slide, please. I'll just brief that. Okay, so ये दो contest हैं where who all are 18 plus, मैं उनको बोल रही हूँ, like you can participate in a contest that by donating blood, you can go ahead and donate blood, and you can take a picture and upload on your social media, and after that you can just do one thing. You need to tag BloodConnect and with hashtag Batle Bandya, and definitely you can win amazing prizes since our campaign is going on even now. So you can do that. Thumbs up for that. And yeah, mascot, if you find anywhere this mascot, if it's roaming in your city, then you can click picture. If suppose you're not able to donate blood for any reason, कि HB कम है या फिर you cannot, underage हो या जो भी है, you can click picture with this mascot and you can again tag BloodConnect on from your social media. Basically why we are doing this, so that more people get involved and more people get aware about this thing, right? So that is the point. Next slide, please. Okay, so this is regarding the blood donation. Like whatever we are doing right now, that comes at a cost. Okay, so if not possible, you can donate some amount, like minimum 100 to 150. You can save 3 lives. Basically, we do that. So because we need to collaborate with organizations. We need to organize camps. We need to create awareness. We need to handle emergency helplines. Collaborate with blood banks, and then you can see we need to donate, give souvenirs to donors, because यार ऐसे तो कोई नहीं आएगा. तुम लोग का भी कोई एजेंडा रहा होगा. Usually तो नहीं आते. Like I'm not saying, I'm very happy you all joined today, but yeah, mostly लोगों को ऐसे ही motivate करना पड़ता है. Okay. Next slide, please. So, okay, हमारा reach क्या है? Like we have reached 13,000 blood donation camps have been organized in so many years. We have collected 1,20,000 blood units. 1,000 plus awareness sessions have been taken. So many people have reached together to create awareness. And yeah, we have 250 plus volunteers. Even you people can join us, like most welcome. So that is one thing. And 1,000 plus blood units collected per year. So basically हमारा विजन क्या है? शॉर्ट में बता देती हूँ जल्दी से कि by 2025 we want to reach 1 million blood units collect करें every year. Okay, because shortage to 2 million की रहती है हर साल, and that thing is keep on increasing. Okay, मतलब वो कम नहीं होती है. Road accidents के cases बढ़ते हैं, thalassemia cases are being increased, so blood unit requirement is also increasing, right? So we want that we can do this thing, like in that case we want to achieve this milestone, and people like you can definitely help us in that. And 40% regular donors, we want people to come ahead again and again to donate blood. ऐसा नहीं कि एक बार करके भूल गए, definitely not. 100 plus cities where BloodConnect champion saves life. Okay,
So you can be a volunteer in your city. Isn't that amazing? Next slide, please. ओके सो बेसिकली इसमें ये दिखाया गया है कि हमारा काम कोविड में भी नहीं रुका है, लाइक इवन लॉकडाउन में भी नहीं रुका था. वी वर ऑर्गेनाइजिंग कैंप्स, वी वर ऑर्गेनाइजिंग अवेयरनेस सेशंस, एंड वी वर हैंडलिंग प्लाज्मा डोनेशंस एज वेल. वी वर हैंडलिंग हेल्पलाइन रिक्वेस्ट. सो यार कोविड आया था, लॉकडाउन लगा था, बट रिक्वायरमेंट कम नहीं हुई थी. यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज व्हाट पीपल थॉट, यार कोविड आया, सब लॉकडाउन में है, अब किधर बाकी चीजें भी हो रही थी दुनिया में. प्रेग्नेंट लेडीज वर नीडिंग ब्लड, एक्सीडेंट्स हो रहे थे, रोड एक्सीडेंट्स हो रहे थे, दैट थैलेसीमिया किड्स वर नीडिंग ब्लड, कैंसर पेशेंट्स ऑल्सो नीड ब्लड. ओके, सो ये रिक्वायरमेंट कम कहीं नहीं हुई है. ओके, so you need to come ahead and donate blood for those people. Okay, next slide please. Obviously we follow all the SOPs after pandemic. We sanitize, we make sure that everything is sanitized, people are wearing masks, and everything is checked properly. Okay, that is one thing. And social distancing should be also maintained, right? So wo hamari responsibility again. Next slide please. So these are few of our collaborators from past years. Robin Hood Army, you can see Maharashtra Police, BITS Pilani, Pune Police, IIT Delhi, IIM Kozhikode. So yeah, as you can see, Tata Motors. Next slide please. अरे यार चलो यार क्विज आ गया मेरा फेवरेट. जल्दी से बता दो, which is the universal blood donor group? जल्दी जल्दी यार, come on, इतना तो हमने स्कूल में भी पढ़ा है. ओ पॉजिटिव मैम. ओह ब्लड डोनर. हाय देख लो यार, फिर से गलत हो गए तुम लोग. कोई ना, चलो नेक्स्ट स्लाइड आंसर देख लेते हैं. ओ नेगेटिव कैन बी अ यूनिवर्सल डोनर. ओके, ओ पॉजिटिव नहीं, क्योंकि ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव को नहीं दे सकता है. So obviously O negative is the universal donor. Okay, but vice versa is not true. Okay, like O negative cannot take blood from other blood groups. Okay, so that is the thing. Next slide please. How long does it take for our body to replenish donated blood? मैम हिंदी यार मैं अच्छा हिंदी में बोलूं तो 3 to 4 month मैम. ओके, रितेश ने आंसर कर दिया. चलो अंकित आपके लिए बोल देती हूँ कि कितना टाइम लगता है जो ब्लड हमने डोनेट कर दिया उसको वापस मिलने में, लाइक बनने में. या चलो कोई नहीं, बोल दिया, अभी आंसर देख ही लेते हैं. चलो नेक्स्ट स्लाइड. So yes, body replaces the plasma and platelet within 48 hours. जैसे मैंने पहले भी कहा था कि when you donate, but it is advisable कि आप 15 days में करो, right? So red blood cells need about 4 to 6 weeks for complete replacement. You need to wait for 90 days, that is 3 months, or 12 weeks, that is 4 months, to donate again. You don't need to replenish donated blood to stay healthy. Okay, so आप healthy रहते हो. So जिसने भी बोला था ना बीच में कि like blood donate करने के बाद weakness आ जाती है, नहीं आती है, ठीक है? That is not dependent on that thing. इसलिए वो standard रखा गया 350 to 450 ml you can donate. Next slide please. Okay, चलो यार that's all from my side. किसी के कोई questions हो तो बता दो. और हाँ, हमने chat box में डाला था. Okay, let me just check. ब्लड, हाँ ये देखो यार, 2 लिंक्स आए हैं चैट बॉक्स में, देख लो. फिर से डाल देती हूँ. यू कैन कॉन्टैक्ट BloodConnect.org कभी भी, फीडबैक्स दे दो और मेरे को बताओ यार कि कौन ब्लड डोनेट करेगा जेन्युइनली. और किसी के कोई भी क्वेश्चन है जल्दी पूछ लो, मैं इधर हूँ अभी. फॉर हाउ मच टाइम वी कैन स्टोर ब्लड? ओके अनीश, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. वो एक्चुअली ब्लड बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है. बट यस, ब्लड ऑल्सो कम्स विद एन एक्सपायरी डेट. ऐसा नहीं कि मतलब आपने एक बार डोनेट कर दिया तो वो बैग कितने भी दिन तक रख सकते हैं. सो लाइक वो कुछ दिन तक तो चल ही जाता है, लाइक 14-15 days, बट उससे ज्यादा नहीं रख सकते हैं. ओके,
सो दैट इज द थिंग, इसलिए आपको बार बार डोनेट करना पड़ता है. मतलब ऐसा नहीं कि यार एक बार ही सबने डोनेट कर दिया फिर वो स्टोर हो गया. ओके, एनीवन, कोई भी डाउट है? समझ में आया है क्या सेशन? हेलो मैम. Yes, ma'am. हाँ हाँ. Yes, ma'am. Ma'am, why there is a need of plasma donation if blood donation can overcome the criteria? सी किसने बोला ये? आई एम सो सॉरी एक्चुअली, 2-3 गिरधर कुमार. ओके, गिरिधर. सो गिरिधर, यू नो बेसिकली हर ट्रीटमेंट अलग होता है. सो जब आपको किसी को डेंगू होता है, यू मेट हैव हर्ड कि प्लेटलेट काउंट्स बहुत ज्यादा गिर जाते हैं. सो ऑब्वियसली आप उसको जाके अगर खून दोगे तो ऑब्वियसली दैट वोंट सफाइज द क्राइटेरिया ना, उसको प्लेटलेट की जरूरत है. सो आपको उधर प्लेटलेट ही देना पड़ेगा. सिमिलरली व्हेन यू टॉक अबाउट प्लाज्मा डोनेशन, तो जैसे कीमोथेरेपी, लाइक पीपल आर गोइंग अंडर कीमोथेरेपी, या और भी बहुत सारे मेडिकल टर्मिनोलॉजीज ऐसे हैं जिन्हें मे बी हमें नहीं, बट वो अभी भी यूज होते हैं. एंड आई एम रियली लाइक आई वांट टू गिव यू अ नंबर कि जो फीमेल डोनर्स है, स्पेसिफिकली जितनी भी फीमेल्स होंगी यहाँ पे, मैं 2-3-4 अभी स्क्रीन में देख रही हूँ, सिर्फ 18,000 रजिस्टर्ड डोनर्स हैं एसडीपी के, प्लेटलेट और प्लाज्मा के लिए. सिर्फ 18,000 फीमेल डोनर्स हैं. सो यू नो लाइक इतने बड़े आबादी वाले देश में लाइक इतना कम. सो यार कम ऑन यार, ध्यान दो अपने हेल्थ पे और प्लीज कम अहेड टू डोनेट. सो आई होप गिरिधर यू गॉट योर आंसर कि हर चीज की रिक्वायरमेंट अलग होती है, आप इमीडिएटली नहीं दे सकते हो. फॉर इमीडिएट इफेक्ट दैट थिंग. क्योंकि जब आप ब्लड दोगे किसी को तो कब तक अब्सॉर्ब करेगा, उसको टाइम लगेगा ना, डायरेक्टली नहीं अब्सॉर्ब कर सकता बॉडी प्लेटलेट उसमें से. सो दैट इज द थिंग. एनी मोर क्वेश्चंस? यार सबको सर्टिफिकेट चाहिए तो यार प्लीज फीडबैक फॉर्म भर दो इधर, ये आया था. इज इट विजिबल? मैं एक बार फिर से डाल देती हूँ. और कोई क्वेश्चन मीनवाइल पूछ सकते हो यार अनम्यूट करके. ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है? आई एम अज्यूमिंग कि किसी को कोई डाउट नहीं है यार. तो फिर पक्का से तुम लोग बनोगे ना ब्लड डोनर्स? हाँ ना, कुछ तो बोल दो यार. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. और इधर आई गेस जो भी 18th बर्थडे अपना ऐसे ही स्टार्ट करना यार प्लीज. दैट वुड रियली हेल्प अ लॉट. बट मैम AB पॉजिटिव तो नहीं ना दे सकते हैं. AB पॉजिटिव क्या नहीं दे सकते? यस मैम, AB में तो सबका ले सकते हैं लेकिन दे नहीं सकते. दे सकते, ले नहीं. AB पॉजिटिव की बात करो, AB नेगेटिव वो AB पॉजिटिव सबका ले सकते हैं लेकिन किसी को दे नहीं सकते. नहीं, AB पॉजिटिव दे सकता है ना, AB नेगेटिव नहीं दे सकता. AB नेगेटिव सबका ले सकता है. ओके, अगर नहीं, मेरे डॉक्टर बोला था कि AB तुम ले सकते हो. हाँ, AB उन्होंने जनरल AB ग्रुप का बोला ना. तो पॉजिटिव लाइक वो AB नेगेटिव से ले सकता है ना. हाँ, तो AB नेगेटिव इसलिए रेयर भी होता है बहुत ज्यादा. अरे यार थैंक यू यार अनिकेत, इससे बड़ी खुशी की बात क्या है? ऑर्गन डोनर बनूंगा, वेरी गुड, और भी अच्छी बात है. नहीं यार, ब्लड छोटी बात नहीं है, ब्लड भी बहुत बड़ी बात है अंकित. डेफिनेटली ये प्लीज यार छोटा बड़ा मत समझो, एक जान बचा सकता है खून भी. बिना खून के पानी में नहीं जी रहे हम लोग, हमारे बॉडी में भी खून है. ओके, सो नो इश्यूज. थैंक यू. आई होप सबने भर दिया रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सॉरी फीडबैक फॉर्म सबने भर दिया. यार तुम लोग को सर्टिफिकेट उस हिसाब से ही आएंगे फिर इस सेशन के. Ma'am, sir will post into the group as well. ओके, Fill it from there. Okay, ma'am. okay, great. So it was really Thank you awesome. for attending this session and being the amazing audience. Ma'am, it was really awesome to hear from you. So here we come to the end of this amazing webinar from our guest, Miss Preeti Srivastava. I would like to express my heartfelt thanks to you, ma'am, for accepting our request
and taking this time out for the same. I'm thankful to my entire team who worked tirelessly to make this a success by reaching out and sharing their views to a lot of people. Finally, I thank the participants without whom the session wouldn't have been this much interactive and robust. Thank you so much, guys. Thank you so much, all of you. Thank you, ma'am. And with that being said, thank you everyone for joining us today, and we will see you guys tomorrow at 6 p.m. in the third webinar of our tetralogy. This is Naman Kumar Sinha And this is Janki Damri. signing off.